बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक्सपर्ट Mdcat के प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 18 रिप्रोडक्शन के MCQs। क्वेश्चन नंबर 1 है a type of cells in human testes which produce testosterone is called. These are called interstitial cells or Leydig cells. They are present in the lining between seminiferous tubules. Correct option is A, that is interstitial cells. Question number 2 is breakdown of endometrium during menstruation is due to जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल ड्रॉप होता है तो टाइनी आर्टरीज जो कि एंडोमेट्रियम की तरफ ब्लड सप्लाई करती हैं वो क्लोज हो जाती हैं। एंडोमेट्रियम इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस होती है। द लाइनिंग कोलैप्स एंड ब्रेक्स ऑफ ड्यू टू डिप्रीवेशन ऑफ ऑक्सीजन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज डिक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 3 इज oogonia are produced in germ cells of oogonia are source of renewing germ cells population in the ovary. So correct option is D, that is ovary. Question number 4 is luteinizing hormone triggers. देखें जब डिक्रीज़ होता है FSH की लेवल में और इंक्रीज़ होता है एस्ट्रोजन का लेवल, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सीक्रेट करता है एक हार्मोन, उसे हम लोग ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, और जो ट्रिगर करता है ओव्यूलेशन को। ओव्यूलेशन कहते हैं रिलीज ऑफ एग को। क्वेश्चन नंबर 5 इज सिफिलिस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय ट्रिपोनीमा पैलिडम। जब हमारे पास ट्रिपोनीमा पैलिडम जो होता है ये अफेक्ट करता है आइज़ को, हार्ट को और नर्वस सिस्टम को, स्किन को, बोन जॉइंट्स को, इन सबको। क्वेश्चन नंबर 6 इज डिस्चार्ज ऑफ ओवम और सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी और फ्रॉम ग्राफ्ट एंड फॉलिकल इज कॉल्ड। इस डिस्चार्ज को हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन, जिसको हम रिलीज ऑफ एग भी कहते हैं सिंपल वर्ड्स में। क्वेश्चन नंबर 7 है second meiotic division in the secondary oocyte proceeds as far as metaphase. Correct option is A. The second cell is called first polar body. A secondary meiotic arrest occurs this time at the metaphase 2 stage. At ovulation, this secondary oocyte will be released and travel towards uterus. So correct option is A, that is metaphase. Question number 8 is which one of the following differentiate directly into mature sperm? जो स्पर्मेटिड है वो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। स्पर्मेटिड इमेच्योर स्पर्म्स को कहते हैं जो कि मियोसिस की वजह से प्रोड्यूस होता है और मियोसिस के प्रोसेस के ड्यूरिंग प्रोड्यूस होता है, तो ये डायरेक्टली डिफरेंशिएट करता है मैच्योर स्पर्म में। क्वेश्चन नंबर 9 है यूट्रस ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू इट ओपन्स लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस दैट ओपन्स इनटू वेजाइना इज सर्विक्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 10 is spermatogonia differentiate directly into primary spermatocyte which undergo meiotic division 1 to form secondary spermatocyte. So correct option is B. Question number 11 is Treponema pallidum causes syphilis and it is sexually transmitted disease. Question number 12 is what is the location of interstitial cells in testes? इसको हम लोगों ने पहले MCQs में डिस्कस किया था। इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स ये प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान और ये सीक्रेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को। क्वेश्चन नंबर 13 इज अ टाइप ऑफ सेल्स इन ह्यूमन टेस्टिस व्हिच प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन आर कॉल्ड these are called interstitial cells or Leydig cells. Correct option is D. Question number 14 is the hormone produced from corpus luteum is called progesterone and corpus luteum is yellow glandular structure. So correct option is B, that is progesterone. Question number 15 is testosterone is produced by which one of the following? Testosterone is produced by interstitial cells, ये सेम है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, और इसको हम लोग Leydig cells भी कहते हैं। interstitial cells को ये प्रेजेंट होते हैं between seminiferous tubules के। Question number 16 is the oocyte released during ovulation is in metaphase 2. Correct option is D. जब हमारे पास secondary meiotic arrest occur at metaphase 2 and at the time of ovulation this secondary oocyte is released. Simple. Question number 17 is yellow glandular structure formed after the release of egg from follicle is called corpus luteum and it secretes progesterone. Correct option is B. Question number 18 is on puberty development of primary follicles is stimulated by production of follicle stimulating hormone, that is FSH. Question number 19 is causative agent of a sexually transmitted disease that affects mucous membrane of the urinogenital tract is called, that is Neisseria gonorrhea. So correct option is B,
and it is a gram positive, and it is caused by a gram positive bacterium. It affects mucous membrane of urinogenital tract. Question number 20 is, in human testes which structure is responsible for carrying sperm from inside of the testes? तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो मेरे पास वेज डिफरेंस है, ये वेजा एफरेंशिया नहीं है। करेक्ट ऑप्शन है वेज डिफरेंस, ये मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है which is responsible for carrying sperm inside testes. And West deferens, VAS deferens, is present in between epididymis and urethra and connect these together. Question number 21 is, in which part of female reproductive system fertilization takes place? Fertilization of ovum takes place in proximal part of oviduct, and oviduct is passageway from ovaries to outside of the body, so correct option is A, that is proximal part of oviduct. Question number 22 is, in females FSH stimulates the ovary to produce FSH, जिसको हम लोग follicle stimulating hormone कहते हैं. It stimulates the ovary to produce estrogen hormone, so correct option is B. Question number 23 is, syphilis sexually transmitted disease is caused by, it is caused by Spirochetriponema pallidum. Question number 24 is, in which phase of human female menstrual cycle endometrium prepares for the implantation of embryo? It is in secretory phase or luteal phase. It occurs from day 14 to day 28 of cycle. Endometrium prepares for implantation of embryo. So correct option is B. There is secretory phase. Question number 25 is, events of menstrual cycle are regulated by the, these are regulated by the gonadotropins, and the uterus are regulated by pituitary gonadotropins. Question number 26 is, decrease of FSH and increase of estrogen occur, cause pituitary gland to secrete. It causes pituitary gland to secrete luteinizing hormone. और कब, जब हमारे पास FSH का लेवल डिक्रीज होगा और एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा. Correct option is C, that is luteinizing hormone. Question number 27 is, transmission of Neisseria gonorrhea is best described by which one of the following? It is best described by unsafe sex. Neisseria gonorrhea is caused by sexual, it is a sexually transmitted disease, and it is called gonorrhea. Question number 28 is, there is structure in female reproductive structure where fertilization takes place. ओविडक्ट, ओविडक्ट में हमारे पास होती है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फर्टिलाइजेशन, और ओविडक्ट हमारे पास कहते हैं पैसेजवे फ्रॉम ओवरीज टू आउटसाइड ऑफ बॉडी. फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एट प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट. क्वेश्चन नंबर 29 इज, which one of the following directly develops into sperms? स्पर्मेटिड्स जो हमारे पास इमेच्योर स्पर्म्स होते हैं वो डायरेक्टली डिफरेंशिएट होते हैं स्पर्म्स में. करेक्ट ऑप्शन है सी. क्वेश्चन नंबर 30 है, FSH stimulates the production of estrogen hormone, which is two targets dash and dash. Two targets are uterus and anterior pituitary. Correct option is B. Question number 31 is, which one of the following hormones suppresses ovulation? And progesterone suppresses ovulation, and ovulation is called release of egg. Question number 32 is, Question number 32 is, which one of the following hormone causes ovulation? Luteinizing hormone causes ovulation. Correct option is A. Question number 33 is, all of the following are the parts of female reproductive system except cervix is part of female reproductive system. So correct option is B. Question number 34 is, meiosis occurs in human females during, it occurs during gametogenesis. And gametogenesis is the process of division of diploid cells to produce new haploid cells. Thank you so much.